So hello, we were doing complete syllabus for EPFO 2025. Let's start with chapter 8, that is final accounts. We have already completed 7 chapters accounting principles mein. If you haven't watched those 7 chapters, then go and watch it. This subject is very scoring and very easy. Okay, so let's start with it. Introduction. At the end of every accounting period, a business must know profit or loss made during the year. ठीक है, एंड में यू वांट टू नो कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑन दी क्लोजिंग डेट. तो कैसे निकाली जाती है, क्या उसका साइकिल है, ऑल ऑफ दैट वील कवर इन दिस चैप्टर. देन टू डू दिस, अकाउंटेंट्स प्रिपेयर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स कंप्राइजिंग ऑफ क्या, ट्रेडिंग अकाउंट डिटरमाइन करेगा ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटरमाइंस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड बैलेंस शीट shows asset, liabilities and capital on specific dates. So if you have watched the previous chapters, then you must be aware कि each and every statement that we are taking here, all of them are very important. Direct questions are there from these statements, that's why these statements are taken. Then before going to point 2, conduct is going to be the same, जिसमें हम देखेंगे theory, then some previous year questions जो आए हुए हैं उस chapter से, उस topic से. Then we'll move on to flashcards which you can use for a revision when you are revising your course 2-3 days before the exam. At the same time, important questions. These questions will come directly if question is from this chapter. So let's start and go back to our point 2, objectives of final accounts. So objective is determine profit or loss. Trading and profit and loss account show how much was earned or lost. No financial position. Balance sheet shows solvency and liquidity. Assess operational efficiency. Helps compare performance year to year. Tax and legal requirement mandatory for compliance and audits. Decision making. Aids owner, investors, creditors. मतलब help करता है. Aids किसमें, decision making में. Then structure of final accounts. Trading account to gross profit or loss. Then structure of final accounts. So trading account टू ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस. सो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका काम क्या है, क्या बताना कि डिटरमाइन करना कि ग्रॉस प्रॉफिट है कि या लॉस है. देन जो वैल्यू यहाँ आएगी दैट वैल्यू विल बी टेकन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन क्या डिटरमाइन किया जाएगा, नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है उससे. देन दैट वैल्यू विल बी यूज्ड इन दी बैलेंस शीट, एंड देन उससे क्या निकलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन, टू फाइनली एनालाइज एंड डिटरमाइन कि जो चीज़ें जा रही हैं बिजनेस में वो सही जा रही हैं या नहीं जा रही हैं. सो दिस कंप्लीट साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, देन यहाँ से जो निकलेगा दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या लॉस, एंड देन जो यहाँ से निकलेगा दैट विल बी यूज इन बैलेंस शीट. उससे क्या होगा, बनेगा अपना फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है. द प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप which are used to determine a business profitability and financial position at the end of an accounting period. तो वही चीज़ लिखी हुई है क्या डिटरमाइन करने के लिए कि फाइनली उस बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या चीज़ हुआ, दैट नीड्स टू बी डिटरमाइंड इन दी एंड. ठीक है. देन फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी, ट्रेडिंग अकाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस. सो इसका क्या मतलब है, द ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फर्स्ट. सबसे पहले क्या प्रिपेयर किया जाएगा, ये. Its primary purpose is to ascertain the gross profit और gross loss. क्या मेन पर्पस है, ये पता लगाना कि ग्रॉस प्रॉफिट है या लॉस है, रिजल्टिंग फ्रॉम दी कोर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, उससे जो भी चीज़ हुई आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. देन सेकेंड स्टेटमेंट वॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नेट प्रॉफिट या लॉस. दैट मीन्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो नोन एज द इनकम अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर दी ट्रेडिंग अकाउंट. पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट से कर लिया, उसके बाद इट टेक्स द ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस फिगर एंड अकाउंट्स फॉर ऑल अदर इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस incurred by the business like administrative, selling and distribution cost, financial expenses, and then that will be used कहाँ पे, balance sheet, and उससे बनेगा financial position. So the meaning of this statement is the balance sheet is a statement of assets, liabilities and owner's equity at a specific point in time, usually the last day of the accounting period. Unlike the other two accounts, it is not an account in the double entry sense but a summary statement. इससे हम पहुंच जाएंगे अपने फाइनेंशियल पोजीशन तक.
देन ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जो हमने ऊपर अभी देखा स्टेटमेंट में. फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस CGS, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देन ग्रॉस लॉस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स. ठीक है, ऑब्वियसली आपने थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा आपके सिंपल इंटरेस्ट वगैरह से, इफ़ यू हैव डन प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, सो नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. देन फॉर्मेट डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे योर इनकम. ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे, डेबिट साइड पे. सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कहाँ पे, क्रेडिट इनकम्स में. देन परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, एंड देन क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक. Then direct expenses, that is your wages, carriage, inwards, factory rent, all of that debit expense. Then to gross profit C/D and by gross loss B/D. ये हमने पढ़ा था in the previous chapter. What is C/D and B/D बहुत डिटेल में पढ़ा था. So CD is carried down and BD is brought down. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. PYQ एज इट इज़ आया हुआ है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD एंड BD इन अकाउंटिंग. सो कैरीड डाउन एंड ब्रॉट डाउन हमने याद रखा था C से. कैरीड इज C से, तो C से कैरीड डाउन एंड B से ब्रॉट डाउन. साथ ही हमने वो भी डिस्कस किया था कि कौन सा क्लोजिंग पे होता है, कौन सा ओपनिंग पे. सो हमने याद किया था C से होता है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग इज C कैरी डाउन, एंड B से ओपनिंग पे होगा ब्रॉट डाउन. देन इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो ऑब्वियसली और ग्रॉस प्रॉफिट. क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है, नंबर बड़ा है डेबिट साइड से, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा. हमने एग्जाम्पल भी देखा था प्रीवियस चैप्टर में, जब 8,000 हमारे पास बच गया था एक्स्ट्रा. देन इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, देन ग्रॉस लॉस. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Purpose to find net profit or net loss by considering the indirect items. Formula net profit is gross profit plus other incomes minus जो भी indirect expenses हैं वो. So then you will reach your net profit. All the formulas are very important. The last chapter also we have discussed a lot of formulas. All of those are very very important. Then format debit credit, debit expenses and losses, credit incomes and gains, office and admin expenses, gross profit brought down. Then here selling and distribution expenses, commission received, यहाँ पे depreciation, bad debts, interest received, rent received, then interest on capital. To net profit carried down, discount received by net profit brought down. If again credit is more than debit, तो net profit. If debit is more than credit, तो your net loss. Then balance sheet. It shows financial position of the business on a specific date. The complete definition is important as it is question can be there. What is a balance sheet? Even ये previous year में आया हुआ है. So to show financial position of a business on a specific date is your balance sheet. Then a balance sheet is a statement showing assets, liabilities and capitals of business on a particular date. Equation जो गोल्डन इक्वेशन हमने पढ़ी थी, गोल्डन रूल, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. तो हमने क्या याद किया था, संदीप भाई एस्पिरेंट से ALC, संदीप जो भी नाम था उसका, संदीप बुल्हान शायद, तो ALC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर थे वो, तो उससे हमने ये गोल्डन रूल याद किया था. ALC दैट इज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. ओके, देन फॉर्मेट liabilities amount, assets amount. यहाँ पे और कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स एड न्यू प्रॉफिट लेस नेट लॉस, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन योर टोटल. दिस इज द फॉर्मेट. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन बैलेंस शीट. सो फिक्स्ड एसेट example land, building, machinery, furniture. Current asset is your cash, debtor, bills receivable and stocks. Then your fictitious assets, preliminary expense and advertisement expense. Then your current liabilities, creditors, bills payable, outstanding expense. Then your long term liabilities, that is your loans and debentures. Then reserves and provisions, general reserve, provision for doubtful debts, adjustment and final account. So closing stock, credit trading account and show as assets.
Outstanding expenses, add to expense, show as liability. Prepaid expenses, deduct from expense, show as asset. Accrued income, add to income and show as asset. Unearned income, deduct from income, show as liability, क्योंकि क्या है, unearned income है. Then depreciation, charge to profit and loss account, deduct from asset. Bad debts, provision for doubtful debts, adjust against debtors. Interest on capital drawings, adjust in capital and profit and loss account. Closing stock not given, calculate via CGS, that is your cost of goods sold formula. Difference between trial balance and balance sheet. नेचर की बात करें तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट. अगेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, अरिथमेटिक एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस में हमने याद किया था ए बार बार याद किया था. एंड बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन. स्टेज, प्रिपेयर्ड बिफोर फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस. अकाउंट्स इंक्लूडेड all ledger accounts in trial balance, only real and personal in balance sheet. Then balance type, debit is equal to credit, एंड में इक्वल. एनर्जी का डेफिनेशन से हमने याद किया था साइंस. देन बैलेंस शीट, ALC assets is equal to liabilities plus capital. Then common items and final accounts. Direct expenses, wages, carriage, inwards, power, fuel. Indirect expenses is your rent, salary, commission paid. Indirect incomes is rent received, commission received, adjustment, closing stock, depreciation, prepaid, outstanding items. Again important, MCQ में it can come directly कि कौन सा direct expense है. So wages, carriage, inwards, power and fuel are all examples of direct expenses. Then formulas, CGS, that is your cost of goods sold, opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. Gross profit is net sales minus cost of goods sold. Net profit is gross profit plus other incomes minus indirect expenses, जो हमने अभी ऊपर देखा क्या क्या आता है indirect expenses direct expenses में. Capital at end, capital at start plus net profit minus drawings. Accounting equation, जो golden rule golden equation भी हम बोलते हैं, that is our ALC, संदीप भैया, that is assets is equal to liabilities plus capital. All of these are very important. You will find this PDF as well as the PDFs on the Telegram. If you want link of the Telegram, then do let me know in the comment. I'll provide you with the link. Also the name is EDUASTRA. Then previous year question किससे आए हुए हैं, gross profit पूछा हुआ है, sales minus cost of goods sold. ठीक है. Then which item appears in trading account, carriage inwards, which is not direct expense, office salary. ठीक है. Then which statement shows financial position, balance sheet. और ये किसमें हमने याद किया था, ट्रायल बैलेंस के लिए, अरिथमेटिक एक्यूरेसी. तो अगर क्वेश्चन आता है 100% एक्यूरेट है या नहीं, सो दी आंसर इज नो. ये क्वेश्चन भी हमने देखा था जो प्रीवियस ईयर में आया है, पूछा हुआ था एक्यूरेसी का कि 100% एक्यूरेट है. सो आंसर इज नो, क्योंकि क्या है, बस अरिथमेटिक एक्यूरेसी है. रेंट रिसीव्ड इज शोन इन विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ विल कम टू फ्लैश कार्ड्स, और यू कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जिससे क्वेश्चन विल कम इफ क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस चैप्टर. So you can revise it before the exam as well. Then what are final accounts? Financial statement prepared at the end of an accounting year to determine profit, loss and financial position. What are the main components of final account? Trading account, profit and loss account, balance sheet. What is the purpose of trading account? To ascertain gross profit or gross loss. What is the purpose of profit and loss account? To ascertain net profit or net loss. What is the purpose of balance sheet? To show the financial position of the business on a particular date. What does the trading account record? All direct expenses and direct incomes related to buying and selling of goods. What does the profit and loss account record? All indirect expenses and indirect incomes. Formula for gross profit. So gross profit is net sales minus cost of goods sold. Formula for cost of goods sold, opening stocks plus purchases plus direct expenses minus closing stock. Formula for net profit, gross profit plus other incomes minus indirect expenses. Which account shows both opening and closing stock? Trading account, opening on debit side, closing on credit side. Then in which account is carriage inwards recorded?
ट्रेडिंग अकाउंट हमने देखा था थोड़ी देर पहले, हैज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, इन विच अकाउंट इज carriage outwards recorded. Profit and loss account as selling expense. What is included in direct expense? So wages, carriage inwards, factory rent, power and fuel. What are indirect expenses? Office rent, salaries, depreciation, postage, advertising. What are indirect incomes? Commission received, rent received, interest received. Which account shows depreciation? Profit and loss accounts, expense side पे. Which statement shows the financial position? Balance sheet. Then what is shown on the assets side of balance sheet? All properties, resources and rights owned by the business. What is shown on the liability side of the balance sheet? Obligations and debts owned by the business. What is the basic accounting equation? So ALC हमने याद किया था, asset is equal to liabilities plus capital. What is capital? Owner's claim on the asset of the business is capital. What is the effect of net profit on capital? It increases capital. What is the effect of drawings on capital? Decrease करेगा, it decreases capital. What is current asset? Assets expected to be converted into cash within a year. Example is debtor, stock, cash. What is fixed asset? Assets held for long-term use. Example land, machinery, furniture. What are current liabilities? Obligations due within a year. Example creditors, bill payables. What are long-term liabilities? Obligation repayable after a year. Bank loan या debentures. Fictitious assets. Non-real assets shown temporarily. Example primary expense. Then what is outstanding expense? Expense incurred but not yet paid, added to expense and shown as liability. What is prepaid expense? Expense paid in advance, deducted from expense and shown as asset. What is accrued income? Income earned but not received, added to income and shown as asset. What is unearned income? Income received in advance, deducted from income and shown as liability. How is closing stock treated? Credited in trading account and shown as asset in balance sheet. What is the difference between trial balance and balance sheet? Trial balance is list of balances और balance sheet क्या है? Statement of asset, liabilities and capital. जो हमने ALC देखा, statement of ALC assets, liabilities and capital. Which account records only real and personal accounts? So that is your balance sheet. Which account ensures arithmetic accuracy? AA. क्या आंसर था? ट्रायल बैलेंस. Which concept supports preparation of financial accounts? Matching concept. Expenses matched with revenue. Which concept supports showing assets at cost minus depreciation? Historical cost concept and prudence concept. Which account shows gross profit carried forward? Profit and loss account, credit side. Then which account shows net profit carried forward? Balance sheet added to capital. What is the journal entry to transfer gross profit? Debit trading account, credit profit and loss account. What is the journal entry to transfer net profit? Debit profit and loss account, credit capital account. What is the journal entry for net loss? Debit capital account, credit profit and loss account. Which adjustment affects both trading and balance sheet? Closing account. Which adjustment affects both profit and loss balance sheet? Outstanding on prepaid expenses, accrued or unearned income. Then what does gross profit indicate? Efficiency of production and trading operations. What does net profit indicate? Overall financial performance of the business. What are reserves and provisions? Deducted from concerned assets or shown under. Reserves and surplus. What are reserves and provisions shown in the balance sheet? So deducted from concerned assets or shown under reserve surplus. Then again 2020 का question, balance sheet. This statement shows financial position, so that is your balance sheet. So you'll find the PDF on your Telegram. We'll do the complete course here. So if you need any other help, any other resource, do let me know. I'll provide you with the same. So that's it. Thank you and all the best.